Once again, Rajeev Ranjan in this in-house training program as per guidelines CBSE comes you Patna, and today I will act as resource person, and I like to express by a school management providing me this opportunity. So my topic is teaching a strategy in mathematics. So I session start with a quote. Quote is Shakuntala Devi. So Shakuntala Devi is a mathematician. So my quote is without mathematics there is nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is a numbers. शकुंतला देवी जन्म और मृत्यु और इनका जो कार्यशैली जो है वो दोनों सब इंडिया में ही था. फिर शकुंतला देवी was an Indian mental calculators and writers popularly known as the human computers. Her talent earned her a place in the 1982 education of the Guinness Book of World Record. 1982 में इनका सिर्फ इंडिया में ही इनका नाम नहीं हुआ था. 1982 में Guinness Book of World Records में भी इनका नाम आया था. इनका जो बर्थ हुआ था 4 नवंबर 1929 में. शकुंतला देवी का जो जन्म हुआ था 4 नवंबर 1929 को और इनकी डेथ हो गई थी 21 अप्रैल 2013 को. रहने वाले कर्नाटका के थे. इसके बाद हम देखेंगे अभी अपना जो टॉपिक है टर्मिनोलॉजी टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स. इसमें कुछ हमारा टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, जिसका टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है. इसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ टीचिंग जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही नहीं है. वो सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं, बच्चे को समझाने में किस टाइप का अप्रोच लगा रहे हैं, किस टाइप का मेथड लगा रहे हैं, कौन सा टेक्निक लगा रहे हैं जिससे बच्चे जो है अट्रैक्ट हो. हम जो बोल रहे हैं वो बच्चे हमारी आवाज को सुने, उन आवाज को अपने जेहन तक पहुंचाएं और उनको समझने की कोशिश करें. तो इसमें 3-4 टॉपिक है जो कि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन एक स्मॉल वीडियो से इसको देखेंगे. Everyone, this is Miss Sarah and welcome to Principles of Teaching 2. In the teaching learning process, we need to understand some concepts that are very common. However, these concepts can sometimes confuse the teachers if they do not have a clear definition of them. In this video, I am going to present to you the definition and establish the main differences among teaching approaches, methods, techniques, and strategies. Teaching approach is an overview which applies to learning for all kinds of learners. It is a set of principles, beliefs, or ideas about the nature of learning which is translated into the classroom. For example, we learn from psychology that a person's capacity to learn starts from simple to complex, like a child learns first how to add, subtract, multiply, and divide numbers before he learns fraction and later on do algebra. Because of this psychological basis, we choose teaching approach as spiral. The next concept is teaching method. This is the systematic way of doing something. It implies an orderly, logical arrangement of steps. It is more procedural. It is the plan that you follow when you are teaching. By applying a certain approach, you come up with procedures and practices for teaching your students. This consists of procedure you follow, steps you take, or outline of actions that you have to do. In another video, I will introduce to you some teaching methods and techniques.
Next concept is teaching techniques. These are our own personal strategies that we use in order for us to be effective teachers. This is implementational, meaning that it actually takes place in a classroom. It is a particular trick, a strategy, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Remember that we adapt our teaching to the kind of students that we have, such that our instruction is different for every class and for every kind of students. It is our maneuvering or tactic. It is a personal way of implementing methods. It is a highly individualized and tailor-fitted, customized to students with different learning styles, needs, and interests. Finally, we have teaching strategies. These are methods of approaching a problem or tasks, modes of operation for achieving a particular end, or planned design for controlling and manipulating certain information. Take note that teaching strategy cascades from your identified teaching approach to your teaching method and to your teaching technique. Now, if we want to compare teaching techniques with teaching strategies, the difference would be that teaching techniques are the steps we use in order to teach our students in an organized way. Moreover, it would help us to order better our classes, while teaching strategies are methods we use to teach in order to facilitate our students' learning, and also it helps us to teach in a more creative way. Let us take, for example, you are teaching community helpers as a topic to your learners. Your approach might be constructivist, considering that you want your learners to construct their own learning from their prior experiences. Then your teaching method would be class activity, not lecture. So your teaching technique would be role-playing or dramatization. And for them to discuss how they are going to perform the role-play or dramatization, किसी भी टॉपिक्स को या किसी भी फॉर्मूलास को सब बच्चे जानते हैं। जैसे 6, 7, 8 क्लास के बच्चे को ये पता होता है, जैसे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बारे में बच्चे लोग सब जानते हैं। 6, 7, 8 क्लास के बच्चे, 9 क्लास के बच्चे सब जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके डायरेक्ट अगर तो हम चाहे तो यूजेस भी बता सकते हैं कि, बट इससे पहले अगर जो हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें इसका कि ये डिराइव्ड कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो इसी को हम टीचिंग एक मेथड ही बोलते हैं। और जब उस डेरिवेशन को उसमें हम उसका अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसका देखिए डेरिवेशन ऐसे आप लोग भी तो सब जानते ही होंगे। तो a² को हम ऐसे लिख सकता हूं, a + b के होल स्क्वायर को। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो RHS को डिराइव करके हम लोग LHS लाते हैं। तो इसमें कैसे लाते हैं, सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हो गया LHS, ये हो गया RHS। अब इसको डिराइव करना है, a + b + b into a + b, a² + ab plus b²। so a² + 2ab + b²। तो इससे ये पता चला कि अगर जो मैं इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो ये अपना ये डेरिवेशन आ जाएगा। तो ये सब इससे क्या होता है, इस मेथड से बच्चे को माइंड में सेट हो जाता है कि ये फॉर्मूला जो डिराइव हो रहा है कैसे हो रहा है, कैसे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इस अप्रोच को माइंड में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट, strategies. So teaching strategies are method and technique that a teacher will use support their pupils or students through the learning process. स्टूडेंट्स को टीचर्स किस तरह से सिखाते हैं उसमें आप लोग मेथड और टेक्निक्स का यूज करते हैं। So our teachers will be choose the technique, a strategy most suitable to the topic being. टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना अपना मेथड चूज करते हैं कि जैसा टॉपिक है उस टाइप का मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे।
the level of expertise of the learners and the stage in their learning journey. Some important teaching methods. कुछ टॉपिक मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्लेबी मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड, लैबोरेटरी मेथड। सब अलग अलग इसमें आपका मेथड है जिसको हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग टॉपिक में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड हम लोग ज़्यादातर लिटरेचर से होता है। जैसे किसी भी टॉपिक को उसको हम लेक्चर मेथड का यूज जनरली हायर क्लास में होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस में ज़्यादा हैं, तो वहाँ हम ज़्यादातर ऐसा इस टाइप से अपना कोई भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं बाय लेक्चर मेथड कि स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव होकर सुने। क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता है, आवाज भले सभी बच्चों तक जाए लेकिन पीछे वाले बच्चों को बोर्ड नहीं दिखेगा, तो उसमें जब बोर्ड नहीं दिखेगा तो वो बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो करेंगे। और जब लेक्चर मेथड से ये होता है कि जब आपकी बातें सुन रहे हैं तो भले ही बोर्ड ना दिखे बट आपकी बातों को सुनकर आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। So lecture method is the oldest method of the teaching. It is based on the philosophy of idealism. This method refers to the explanation of the topic to the students. The emphasis is on the presentation of the content. The teachers clarify the content matter to the student by using gestures, simple device by changing voice, changing position and facial expression. Teachers are more active and the students are passive. But the teacher also asks a question to keep the student attentive. This method is economically and can be used among a large number of students. It saves times and also covers the syllabus. इस मेथड में हम लोग टाइम को सेव करते हैं और सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं। जैसे सोशल साइंस में क्या है, इस सोशल साइंस में किसी भी टॉपिक को स्टोरी को उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चे उसको अगर वो समझ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि टाइम का भी सेव होता है और सिलेबस टाइम टू टाइम मतलब कि इजी वे में सिलेबस आपका खत्म होते रहेगा। It is the simplest method of the teacher and does not require to arrangement. It gives the students telling him listening. It provides an opportunity for better clarification of the topic and laying a stress on significant idea. It brings a personal contact and touch the impress of influence the pupils. This method is useful in large classes. But it also has some some eliminations. A passive listeners, there is a very little scope for people active. It is against the principle of learning by doing. Last but not last, it is a teacher centered method. Next is project method.
So the project method is the method of instruction which was introduced during the 18th century into the school of architecture and engineering in Europe, when the graduating student had applied the skills and knowledge they had learned in the course of their study to problems. They had to solve the practitioner to their radar, for examples, designing, monumental building a steam engine. जनरली प्रोजेक्ट मेथड जो है, एक प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड एक कोर्स भी है जिसका नाम है आर्किटेक्चर। आफ्टर प्लस टू बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं जिनका नाम है बीटेक। कुछ बच्चे नीट में एडमिशन लेना चाहता है जिनका नीट से मेडिकल होता है, और कुछ बच्चे आर्किटेक्ट की तरफ भी जाते हैं। आर्किटेक्ट में होता है आपका किसी भी प्रोग्राम का मैपिंग तैयार करना। जैसे कोई भी एक बड़ा बिल्डिंग तैयार हो रहा है, स्कूल की तैयार हो रही है, कॉलेज की तैयार बिल्डिंग हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना बाय मैपिंग बाय प्रोजेक्ट। So the project method is a medium of instruction which was introducing during the 18th century into the school of So see the small video of working model of wind turbine from a cardboard. So after that, next topic is play-way method. Play-way method in this time बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो गया है, पहले इतना ज़्यादा नहीं फेमस था। प्ले-वे मेथड जितना भी अभी तक किड्स स्कूल देख रहे हैं उस स्कूल में प्ले-वे मेथड से बहुत सारा जो किड्स स्कूल है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। इसमें जितना भी बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जो 3.5 साल के एज के बाद के जो बच्चे होते हैं, वो सब प्ले स्कूल में एडमिशन लेते हैं
और उसमें खेल कूद से कुछ सीखते हैं, खेल में ही कुछ सीखते हैं। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले घर में ही ये सब चीज होता था। पहले जल्दी 3.5-4 साल के बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको घर में ही सिखाते थे पेरेंट्स। लेकिन अभी के टाइम में पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है, पैसा लग जाए तो लग जाए, बट वो घर पे ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस मेथड से हम लोग इस मेथड को देखेंगे, प्लेवे मेथड। तो द प्लेवे मेथड ऑफ द टीचिंग propagate through the various interesting activity interested of books. This method was invented by Henry Candwell Cook. He was a British educationalist who wrote the book The Play. बच्चे को कैसे हम लोग प्लेवे मेथड से सिखाते हैं वो हम देखेंगे। एक छोटी सी वीडियो है। Morning everyone. Good morning. How are you all today? Okay, you know what? Let's wear our boxing gloves and start punching the numbers. You know how to say 1 to 10? Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Number 2. Can we all see it? See, this is number 2. And how do we write number 2? Half a circle, out you go. Half a circle, out you go. Half a circle, out you go to make the number 2. Half a circle, out you go. Half a circle, out you go. Half a circle, out you go to make the number 2. Yay! Can you give us another song? Yeah? Okay, let's do it. This is number 2. That means me and you. This is number 2. That means me and you. To mushroom, to fish, to flowers. This is number 2. That means me and you. Eyes, to ears, to hands, to feet. This is number 2. That means me and you. To boxes, to balls, to pens, to rings. This is number 2. That means me and you. Yay! Next is question answer method. So in question answer method is key importance. The question is an attempt to evaluate the knowledge of students in arrange to the subjects. This method is in education to the transferring message by asking a question and students give an answer, or otherwise the students are given the opportunity to ask and answer the question of teachers. जैसे आंसर क्वेश्चन मेथड से हम लोग के स्कूल में भी अभी ये हो रहा है, आंसर क्वेश्चन मेथड, जिसको हम लोग क्यूज क्लासेस के नाम से जानते हैं।
तो क्यूज क्लासेस में बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ जानने को मौका मिलता है कि जो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं वो सर हमसे पूछें और उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि क्यूज क्लासेस का कोई सिलेबस नहीं है, एक कंप्लीटली फाउंडेशन का है। अगर जो बच्चे 9th-10th के हैं तो 9th-10th में फाउंडेशन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उससे क्यूज क्लासेस से ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर में स्टोरेज कितना है, कितना वो चीज को जानते हैं। जैसे सपोज साइंस है तो साइंस में कितना मटेरियल्स उनके पास स्टोर है, तो वो चीज में क्यूज क्वेश्चन आंसर मेथड में बहुत सारे क्वेश्चंस को जानने का मौका मिलता है स्टूडेंट्स को डायरेक्टली विदाउट टॉपिक एक्सप्लेनेशन। Question answer method is one of the oldest method. This method also known as Socratic method of the teaching. It was developed by the famous philosopher Socrates. This method is focused on to achieve the conjugative objectives and bringing knowledge to the conscious level. Next is a storytelling method. A storytelling method in relation to the implementation of the social studies curriculum consists of the putting a suitable story orally in an interesting way before the students in order to realize the stipulated aims and the objectives of the teaching social science. जैसे सोशल साइंस में अभी डिस्कस भी किया था कि सोशल साइंस में अगर जो कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उस टॉपिक के बारे में पूरे स्टोरी एक साथ स्टार्टिंग में बताकर और उस टॉपिक को स्टार्ट करने में बच्चे को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। द स्टोरी टेलिंग मेथड ओरली रिप्रेजेंट द स्टोरी इन विच द ड्रामेटिक वे दैट it helped the listeners maintain their interests and circularity. Next is Montessori method. Montessori method में जनरली हम लोग एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से कुछ पैटर्न बनाकर और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। The Montessori method of the education is a system of education for the children that seeks to develop the natural interested and the activities rather than use the formula teaching methods. It was developed by the physician Maria Montessori. एक Montessori मेथड जो दिए हैं इनका नाम है मैरिया Montessori. So a small clip video in Montessori method. Montessori is a word that is used very frequently by young parents, generally referring to preschool. But what many don't know is that it is the name of a person who devoted the best part of her life to discover about children and their childhood. Her name
was Dr. Maria Montessori, an Italian by birth. Before we tell you more about Montessori and her school of thought, here is the harsh reality of the world we live in. Even if you didn't want your child to be part of the rat race in the world, even then, the person who has a larger quantum of knowledge is considered to be very well educated or even very intelligent. But according to Montessori, knowledge is necessary but not sufficient. To Maria Montessori, a well-educated person is one who knows to live a humanly and healthy life in every aspect of human existence. Hence, she taught the world what she learned following children, and that is what is called Montessori education today. Montessori education is a revolutionary method based on the simple and fundamental principle of following the child. The Montessori program nurtures the natural development of the child and builds on their innate curiosity to learn. It includes peer and teacher interaction and an integrated curriculum that involves activities for self and group learning. Through this, children begin a unique experience to self-discovery. The most integral part of Montessori education is its classrooms. The Montessori classroom can be referred to as a carefully planned environment. It creates a learning space where children feel comfortable to explore, develop a sense of independence, and enhance their cognitive development through learning by doing. The unique combination of activities coupled with self, peer, and teacher learning helps children enhance creativity, build critical thinking, and problem-solving skills. So, what should education be? It has to be an effort to help the child live his life as he is meant to. The emphasis is to be primarily on the psychic development. Montessori calls this the psycho-embryonic period, comparable to physio-embryonic period before birth. The educationalist must take into consideration that the learning has to be done at the pace and rhythm of the learner and not by the teacher. Constant supervision and correction undermines the confidence and therefore the self-reliance of the child. It can be disastrous in developing a child's personality. It has to be understood that the adult must depend on the child as much as a child depends on the adult. The researchers and the studies have clearly indicated the personality of the person gets formed in the first 6 years. Now when a child comes here at 2.5, he is still in the stage of constructing his personality, as Dr. Montessori says. Montessori is observed in 4 distinct periods or planes on human development, extending from birth to 6 years, from 6 to 12, from 12 to 18, and from 18 to 24. Dr. Maria Montessori saw different characteristics, learning modes, and developmental imperatives active in each of these planes and called for educational approaches specific to each period. Take, for example, a 2.5-year-old would have acquired many capabilities and skills during its short span of life and gets an opportunity to perform them in a free environment all by themselves when it is aware of its own capacity. There is a time that comes in life of a child that the same 4 walls, the same people, the same toys will not be sufficient for him.
You always wonder, the child who was so happy just about 2-3 months before, how come suddenly he started like wanting to go off, wanting to do something, and not happy with the same programs. That's exactly what these scientists have found out, a lot of educationists have found out. Around this stage, 2.5 years of age, there is a need for a child to a psychological level. At a psychological level, his needs become different. And a true educator must really advocate for this. And that's what Dr. Montessori has done for us. Guidance and freedom have to go hand in hand. It is a cycle. When freedom to learn is given, the child achieves a certain maturity. On the basis of observing this, the adult is able to offer guidance to acquire a superior level of freedom. This helps the child to acquire a higher level and thereby independence. The freedom in a Montessori environment is not an unlimited one. It has its limitations. Such limitations have been determined by scientific observations in specially created environments. A very common notion is that the child needs encouragement and applause to make him work at his development. But experiences of the Montessori are otherwise. When a child has the opportunity to choose his own work and also to work in freedom, there is a supreme satisfaction in its demeanor that can be seen by a keen observer. The work that satisfies his inner development provides joy and satisfaction that is a reward in itself. In simple words, Montessori education helps parents and peers to follow their child and find out more about them instead of assuming that all children are the same. So Dalton method is very important. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो अभी सीटेट के एग्जाम जो देंगे उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी वीडियो देख रहे थे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसा है जो सीटेट्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो को डेवलप किया है। तो डाल्टन मेथड, द डाल्टन प्लान इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन बाय व्हिच पीपल्स वर्क एट देयर ऑन पेस एंड receive individual help from the teachers when necessary. There is no formula. There is no formal classes instruction. Students draw up timetable and are responsible for the finishing the work on their syllabus or assignment. डाल्टन मेथड्स जो है, ये डाल्टन मेथड सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो यूएसए में, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। जो स्टार्ट किए थे उनका नाम है मिस हेलन फॉरहर्स्ट। इनका जन्म 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1959 में। डाल्टन मेथड का अप्लाई 1912 ईस्वी में हुआ था, जो कि 18 से 12 साल के बच्चों के लिए नई शिक्षा योजना बनाई गई थी। 8 साल से 12 साल के बच्चों के लिए नई शिक्षा योजना बनाई गई थी। उस योजना को
वास्तविक प्रयोग 1913 से 1915 ईस्वी में हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 में, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद 1920 में यूएसए में मैसेच्यूसेट्स में डाल्टन योजना प्रारंभ हुआ था। उसके बाद चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी स्कूल के नाम से ये खोला गया था। तो नेक्स्ट इज डाल्टन से योजना से क्वेश्चन भी आता है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सो नेक्स्ट इज एनालिटिक मेथड। The term analytic is derived from word analysis, which means to break or resolve a thing into the constituent elements. It is a method of unfolding of the statement in question or conducting it the different of operations to the explain the different aspects mentally which are the required for the presentation of the pre-discovered facts. This method includes the breaking of the unknown a problem into the simpler part, which can be recombined to find the solution. The procedure adopted is to go from unknown to known and find out describe the result. The great philologist psychologist Frodenick supported this method. He believed that through analysis the highest intellectual performance of the mind is possible. एनालिटिक मेथड्स में ये हम देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को हम लोग जो प्रूव करते हैं छोटी छोटी गिवन डाटा से उस प्रॉब्लम को प्रूफ तक पहुंचते हैं, ये एनालिटिक डाटा में देखते हैं। एनालिटिक डाटा और इसी के साथ में एक और है सिंथेटिक मेथड। एनालिटिक मेथड इसी के साथ एक सिंथेटिक मेथड है और सिंथेटिक मेथड्स में हम लोग देखेंगे। उसके बाद एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड्स का दोनों का एक बार एक्सप्लेनेशन छोटा सा है, कुछ 2 मिनट्स का है, उसको भी देखेंगे। तो पहले सिंथेटिक मेथड्स का एक्सप्लेनेशन देखिए। दिस मेथड इज अपोजिट टू एनालिटिक मेथड्स as a synthetic is complement of analysis. This term synthetic is derived from word synthesis, which means to combine the together child process from the known to unknown. Fact already known are applied to the new situations so that the combination of the known fact help us to find a new fact. Welcome to your own channel Let's Study with Richa. आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मेथड टीचिंग की सभी सेम ही होती हैं, बस उनके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, लिखने का वे हो जाएगा। ठीक है, और सिंथेटिक मेथड क्या होता है जिसमें कि आप जो पूरा आपका कंसेप्ट है जो ठीक है, यानी कि आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट तक यूज किया जाता है। ठीक है, एनालिटिक मेथड क्या होता है, एटिमोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका ये जो वर्ड है एनालिटिक, ठीक है, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीक है। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करते हो जो बच्चे को नहीं पता होता बट वो अपनी नॉलेज से उसका आंसर करने की कोशिश करता है, तो वो नॉन चीट की ओर बढ़ता है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिस एग्जांपल में एनालिटिक और सिंथेटिक दोनों मेथड का यूज बताएंगे। अब देखिए आपके पास एक पैराग्राम है ABCD, अगर प्रॉब्लम देकर कि हमें क्या करना तो नहीं पता होता बट वो अपनी नॉलेज से उसका आंसर करने की कोशिश करता है, तो वो नॉन चीट की ओर बढ़ता है और उसको कभी भूलता नहीं है। That is the main thing. So next is synthetic method.
In synthetic method, the smaller constituents or parts of a thing are combined or put together so as to be something new. जैसे आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर आपने उसका कंक्लूजन निकाला कि उस बच्चे की नेचर ही ऐसी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि हमने क्या कंक्लूजन निकाले, छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर जो हमने एनालिसिस किए हैं। दिस मेथड गेट्स अस फ्रॉम नोन टू अननोन, जो चीजें हमने पता की उसे unknown की ओर जाए। As a non-bits of information are synthesized, structure may lead us to the desired results or conclusions. The start is always made from the hypothesis and not with the conclusion as in analytic method. अब देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिस एग्जांपल में एनालिटिक और सिंथेटिक दोनों मेथड का यूज बताएंगे। अब देखिए ये आपके पास एक पैराग्राम है A B C D और E एक सेंटर पॉइंट है डायगोनल्स का, A C and B D बोथ आर डायगोनल्स। अब देखिए पैराग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक तो दोनों जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल रहेंगी, है ना, और जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि A E E C के इक्वल होगा, B E E D के इक्वल होगा, ठीक है। पैराग्राम की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है। अब देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब अगर हम सिंथेटिक मेथड को यूज करते हैं, गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ए सी एंड बी डी दोनों डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ई आएगा, जहाँ पे मैंने बोल दिया सही कर लीजिएगा। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ई इक्वल टू ई सी एंड बी ई इज इक्वल टू ई डी। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल ए ई बी और सी ई डी है, इसमें आप ए ई बी और बी ई सी भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू हैव टू टेक ट्रायंगल, ठीक है। सो ए ई बी में क्या होगा, ए ई बी और सी ई डी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, एंगल्स का तो आपको नॉलेज होगी ही। ए बी ई और सी डी ई ये अल्टरनेट एंगल्स आ गए, ठीक है। तो thirdly AB is equal to CD because opposite sides of parallelogram are equal। तो हम लोगों ने तीन चीजें प्रूव कर दी हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, AEB और CEB कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये AE और BE is equal to ED जो हम लोग सिंपल इसमें इस एग्जांपल में ये होता है, इसका प्रूफ हम लोग देखे हैं तो ये कैसे होता है। तो सिमिलरली सिंपल AEB और CED जो दो ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट किया है और दोनों कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इस जगह पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, वो एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सिमिलरली सीपी से क्या हो गया है, वो इक्वल हो गया है। उसको हम इस मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिक मेथड्स कहते हैं। और इसी के साथ एक नेक्स्ट है सिंथेटिक मेथड। मेथड में क्या होता है कि जो हम लोगों ने प्रूव करना है दैट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द स्टूडेंट्स, ठीक है। द रेलेवेंट डायग्राम कैन बी ड्रॉन एंड कैन देन एनालिसिस विल बी प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन पेपर। देखिए जो आपकी पिक्चर थी वो आपकी वही रहेगी, पैराग्राम की ABCD एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज E एंड द सेम क्वेश्चन विल बी, बट the method will be different. Now question will be what is given, expected answer क्या होगा कि ABCD एक पैराग्राम है, ACBD डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इन पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, दिस विल बी द आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट पार्ट्स इन द फिगर देयर आर टू बी प्रूव्ड इक्वल, कि हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ठीक है। ये तो हो गया जनरल क्वेश्चन जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन थे, मतलब कि हमने पूरे क्वेश्चन को पहले एक छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट इज हाउ कैन यू प्रूव दीस पार्ट्स इक्वल। अब क्या गिवन है, क्या हमने प्रूव करना है, वो हमने एनालिसिस कर लिया, अब उसको प्रूव कैसे करेंगे। अब प्रूव ऐसे करेंगे कि अगर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, अगर आप साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, SAS यानी एक साइड एंगल और एक साइड, मतलब टू साइड और एक एंगल को इक्वल प्रूव कर दो तो आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है। आप लोग अरशद सर या रामायण सर या गोपाल सर जब पढ़ते होंगे तो जो प्रूफ जो आता था ज्योमेट्री सेक्शन में, उस प्रूफ को डिराइव नहीं करने की जगह पे स्टेप्स को लिखने के लिए आता था। अभी भी आता है, कंस्ट्रक्शन में तो आता है, कंस्ट्रक्शन में आता है, बट अभी भी कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स नहीं लिखने का आता है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है।
बस अगर जो उस पे मेंशन किया रहता है कि राइट द स्टेप्स, देन हम लोग बच्चे लोग स्टेप्स लिखते हैं. एंड लास्ट इज इंडक्टिव मेथड. Learns the rules through the situation and the sentence and does guided practice. Then the learner learns to the free practice. After that, the teacher discuss or elect the rule from of the learners themselves by themselves. It means किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे रहता है. जैसे हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड ही होता है. ये हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है. और दो ऑड नंबर को अगर जो सम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी ऑलवेज क्या होगा, ऑड नहीं होगा, उसका रिजल्ट इवन होगा. किसी भी दो ऑड नंबर को अगर जो ऐड करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, ये इवन होगा. ये पैटर्न पे बेसिस है. तो इसी तरह से आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे मैथमेटिक्स में. सो नाउ थैंक यू. The tea is over or still tea is going on? Thank you, Rajeev sir. What he has said is really a good thing. Our kids, teachers are also here. Things are very helpful for you. Basic method is there, Palevi method is there. You can take care of those in your classes. 1 to 5 generally Palevi method is very useful. Inductive method is very useful for all of them. Generally we don't follow the lecture method. So analytical method and synthetic method both are good. Inductive method is also good. You can utilize these methods in the class. I cannot say that go for one method always. It depends upon situation. You can switch over from one method to another method. It will be helpful for you. So who has to come tomorrow for this training?